let's see the student. Usually root of 1 minus cos upon theta आता है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, बट लेट्स सी इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट L is equal to limit x tends to 5 under root 2 minus 2 cos x square minus 12x plus 35 upon x minus 5. Or you can rewrite this as limit x tends to 5 under root, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ, ये टर्म को फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा x, आपको मिलेगा x माइनस 5 x माइनस 7. डू वन थिंग, नीचे भी x माइनस 5 x माइनस 7, यहाँ पे x माइनस 7 से मैंने डिवाइड किया और बाहर x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया. क्योंकि ये नॉन जीरो है इसे लिमिट के बाहर हम ले लेते हैं, तो लिमिट के बाहर लोगे तो x की वैल्यू 5 पुट कर दो इसमें. 5 माइनस 7 लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट ऑफ 2 bracket 1 minus cos of x minus 5 x minus 7 the whole upon x minus 5 x minus 7. Now do one thing, put theta is equal to x minus 5 into x minus 7, as x tends to 5 implies theta tends to 0. Therefore, your limit will now become minus 2 limit theta tends to 0 under root 2 bracket 1 minus cos theta upon theta. देखो ये टाइप के क्वेश्चन को हमें इसके एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी चेक करके सॉल्व करना चाहिए. टू चेक दैट, डू वन थिंग, सबसे पहले पुट थीटा इज इक्वल टू minus t, as theta tends to 0 implies t also tends to 0. The left hand limit now becomes L minus 2 limit t tends to 0 under root 2 minus 2 into cos of minus t the whole upon minus t. Take out that minus common, it will become plus 2 limit t tends to 0 under root 2 bracket 1 minus cos of minus theta is equal to cos theta t. That is 2 times limit t tends to 0 2 into 1 minus cos t का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिगो में 2 sin square t upon 2 the whole upon t, or it is equal to 2 limit t tends to 0 2 into sin t upon 2 the whole upon t. So 2 2s are 4 limit
t tends to 0 sine t by 2 upon t. So it is 4 into half. So the answer is plus 2. Now in the same fashion, let's find out the right hand limit. So for that, put theta is equal to plus t as theta tends to 0, t tends to 0. Therefore, L plus is equal to the right hand limit 2 minus 2 limit t tends to 0 under root of 2 minus 2 cos t upon plus t, that is minus 2 into limit t tends to 0 square root of 2 common लिया 1 minus cos t upon t आया. So the answer is minus 2. Limit t tends to 0, ये हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 sin square t by 2 upon t. So limit t tends to 0, 2 sin t by 2 upon t. 2 into 2 is 4, so it will become minus 4. Limit t tends to 0 sin t by 2 upon t. Minus 4 into t by 2 upon t, sin t by 2 upon t is equal to half. So the answer is minus 2. Now, since the left hand limit is not equal to right hand limit, implies limit does not exist. तो ऑप्शन में से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम चेक करें तो हमारा जो L प्लस है वो कितना आया है, -2. सो अब क्योंकि कोई भी आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके नहीं दिया है, तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि हम ऑप्शन बी को मार्क करें ऐसे केसेस में.